Hello, everyone, and very good afternoon once again. So, we are live again with a new chapter of statistics, that is sampling. So, this is basically chapter number 13 from your study material. And from this chapter number 13, we are into unit number 2, unit number 2nd. The first unit था आपका SRD, Statistical Representation of Data. And now we are starting with the second unit, which is sampling. So let's see who are alive with us now. Avni is there, Kunal, Hitesh, Divya, Priyanka, Anuj, Muhammad Anas, Nancy, Dheeraj. Great. So welcome everybody. And let us begin with the topic. So today's topic is basically majority theoretical. Mainly this topic is theoretical and थोड़ा सा कुछ practical questions इसमें होंगे with very less number of formulas. Okay, but we have to understand what is the meaning of the term sampling. आखिर sampling होता क्या है? Some more people are alive now. Priyanka, Mohammad Farhan, Ariharan, Muskan, Shreya, Anushka, Aditya. Great. Hello. So in this topic, basically we have to understand the term sampling. तो sampling हम किसे कहते हैं? So let us understand. सबसे पहले आपको आंख बंद करके सोचना है. You have to think like what is the meaning of the term sample, because you might have used this term many times in your practical life. Practical life में आपने बहुत ज्यादा इस term को काम में लिया है. Then where is the usage of this sample, or you can say sampling, right? So if we talk about like when we are buying some commodities for our household consumption, for our domestic consumptions, like wheat. Normally, when we purchase wheat, it is purchased in bulk, like 100 kilograms, 200 kilograms. तो पूरे एक साल का राशन हम एक साथ में परचेज कर लेते हैं 100-200 kg. Now, this is a very big bag of wheat, and ये पूरा जो wheat का bag है, ये completely filled होता है. This is a 100 kilogram of bag. Now you have to check the quality of this. अब आपको क्या करना है, इसका क्वालिटी चेक करना है. ये वीट कैसा है, जो वीट आप परचेज करने जा रहे हैं वो आपके लिए कितना सूटेबल है या नहीं है. सो वन ऑप्शन अवेलेबल विद यू इज टू चेक इन डेप्थ, लाइक ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू चेक. लाइक इसमें जितने भी दाने हैं, जितने भी ग्रेन्स है, यू आर चेकिंग ईच एंड एवरीथिंग. Is it practically possible? Wheat का एक दाना उठाया आपने, okay, it is okay. Then next one, okay. Next not okay, keep it inside. So this is practically not possible. ऐसा practically possible नहीं है, because in 200 kilograms of wheat, it might be lakhs of grains. हजारों लाखों उसमें grains होते हैं. तो एक एक को चेक कर पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है. So what is the best way to buy that wheat? So what we normally do is we take some sample. Let's say we pick some grains from the stock. आपने स्टॉक में से कुछ ग्रेन्स आपके हाथ में लिए एंड चेक किया what is the quality of this. Then you might have seen one tool which is plugged inside here. यहाँ से एक हमारे पास टूल रहता है, उसको प्लग करते हैं और कुछ ग्रेन्स यहाँ से भी हम बाहर निकाल लेते हैं, and then we can check the quality. Then randomly we can check from this side also. So you can check randomly from different places whether the variety is okay or not. If it is okay, then we can purchase from that lot. But if it is not suitable, we will not buy. Okay. So this is the one example. Second example, of course, given by Tambeshwari, that is when you are having some problem and we go to doctor. डॉक्टर के पास हम जाते हैं, बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन है, कोई प्रॉब्लम है, तो व्हाट द डॉक्टर सजेस्ट इज यू मस्ट हैव द ब्लड टेस्ट. आपको ब्लड टेस्ट करवाना है. नाउ ब्लड टेस्ट करवाना है, तो ब्लड टेस्ट का मेन पर्पस क्या है कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है या नहीं है, तो हमें वो चेक करना है. नाउ फॉर चेकिंग दिस ब्लड देयर आर टू ऑप्शंस. वन ऑप्शन इज आपने अपनी बॉडी में से सारा की सारा जो ब्लड है 5 लीटर पूरा निकाल के डॉक्टर को दे दिया, टेक दिस ब्लड, एंड वापस शाम को डाल देना या अगले दिन डाल देना. इज दैट प्रैक्टिकली पॉसिबल? इज दिस प्रैक्टिकली फीजिबल? नो.
नॉट एट ऑल। पूरा ब्लड आप अपनी बॉडी से निकाल के नहीं दे सकते हैं फॉर टेस्टिंग, बिकॉज हम जिंदा नहीं रहेंगे, तो पूरा ब्लड देना पॉसिबल नहीं है। सो इन दिस केस ओनली वे इज द सैंपल। So what the doctors do, they take 5 ml or 10 ml of your blood and they test. उसको हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी में। नाउ अगर इस 10 ml में कोई प्रॉब्लम आती है, इफ द ब्लड इज इन्फेक्टेड, दैट मीन्स हमारा assumption क्या होगा, पूरी बॉडी में जो भी ब्लड है उसमें इन्फेक्शन इन्वॉल्व है, देन वी हैव टू स्टार्ट विद अ ट्रीटमेंट प्रोसीजर फॉर दैट। बट इफ अगर इस 10 ml में कोई प्रॉब्लम नहीं है, if there is no problem in this 10 ml, then what is our assumption, that the complete 5 liter blood is free of any infection, there is no infection in the blood. So we have just tested 10 ml and we are giving the conclusion for the whole 5 liter blood. This is basically sampling. Okay, understood everybody? Okay, Jayalakshmi is saying, please use English also. Yes, I'm using both the language, so do not worry. I'm mixing Hindi as well as English and repeating each and everything in both the languages. All right. So in these two cases, first case was buying wheat bag, and second one is the blood test. So in both the cases, it is not practically possible to check each and everything. So only way possible is the sampling. So we can take sample. If sample is okay for us, then we will go ahead. If it is not, then we can reject. Okay. Okay. Now, this is these two example basically suggest the need of sampling. इनसे हमें पता लगता है कि sampling की requirement तो होती है. Now, for sampling, there are some basic concepts, some basic principles for sample survey. So, what is the sample survey? सैंपल सर्वे का मतलब क्या है? सैंपल सर्वे सिंपली मीन्स द स्टडी ऑफ unknown population. Sample survey means the study of unknown population on the basis of proper representative sample drawn from it. तो इसका सिंपली क्या मतलब है कि हमें किसी के बारे में पता लगाना है और उसको पता लगाने के लिए वी नीड सम सैंपल. सो अगेन द सेम एग्जांपल अप्लाइज हियर. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लड टेस्ट. Okay. Now, for the study of the whole blood which is inside our body. Okay. What is the purpose? हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड है उसको हमें चेक करना है, उसको हमें टेस्ट करना है. एंड फॉर टेस्टिंग दैट ब्लड वी नीड अ प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फ्रॉम इट. तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल का मतलब क्या है? एक प्रॉपर क्वांटिटी हमें चाहिए जिससे हम टेस्टिंग कर सकें. नाउ अगर हम ऐसा बोले, वी इफ वी गिव अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड, हमने एक सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड दे दिया, सो इज इट सफिशिएंट फॉर दैट सैंपल? नो, दिस इज नॉट सैंपल फॉर, दिस इज नॉट सफिशिएंट फॉर ऑल द टेस्ट. सारे टेस्ट के लिए सफिशिएंट नहीं है, बट ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू चेक योर शुगर लेवल और डायबिटीज लेवल, तो उसके लिए एक ड्रॉप भी सफिशिएंट है. But for most of the blood tests, one drop is not sufficient. So you have to give at least 5 ml or 10 ml as per the requirement. So this is known as sample survey. So sample survey is basically the study of unknown population. उस population के बारे में समझना जिसका हमारे पास knowledge नहीं है. So we have to understand about that population with the help of sample. Okay. Now, there are four basic principles for sample survey. चार basic points यहाँ पे available है. Let's discuss those points. Now, this chapter is completely theoretical, so you have to remember how many principles are there. So there are four principles. Now, ये four principles कौन से हैं? The first one is known as law of statistical regulatory. This is the first principle. Second is known as principle of inertia. Third one is principle of optimization, and fourth one is principle of validity. Now, what is the meaning of all these four? Let us understand that. Okay.
Now, according to the first point, law of statistical regulatory. According to this law, if a sample of fairly large size is drawn, if we draw basically a large sample from the population, then on an average, the sample would possess the characteristics of the population. That means if sample size increases, if sample size increases, that means accuracy also increases. जितना बड़ा आप सैंपल लेंगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी आ जाएगी. So we were talking about a wheat bag of 100 kilograms. 100 kilograms का wheat bag है and let's say there are 10 lakh grains. 10 lakh grains उसके अंदर available है. Now, if we are taking just 2 grains out of that, if we are taking just 2 grains, 2 wheat grains out of that, so can these two represent the whole complete lot? क्या उन दो के बेसिस पे आप पूरा डिसीजन ले सकते हैं कि दिस व्हीट बैग इज परफेक्ट विदाउट एनी प्रॉब्लम? नो. So we have to draw some proper sample. You can you can take one handful or two handful of wheat grains from the top, then from middle, then from bottom. So in this way, from different parts, you have to draw handful of sample. तो हाथ भर के आपको पूरा सैंपल निकालना है. If that is all okay, that then we can assume that the complete bag can be okay. But if we are taking very small sample, अगर आपका sample size बहुत छोटा है, then accuracy will be less. If sample size is more, then accuracy will also be more. Okay. So Ritu Birvatkar has also joined and she is saying, I have passed CA Foundation in December 23 exams. That's great. Congratulations. You are the best maths teacher. Thank you so much, Ritu. You're most welcome. Okay. So this was the basically first law of statistical regulatory. So let us read some more. Thus, the sample to be taken from population should be moderately large. So this para is saying over the same thing, sample size should be large. So larger the sample size, better is the revealing identity of population. So you will get perfect idea about the population, or you can say accuracy will get increased. The reliability of a statistic in estimating a population characteristic varies as the square root of its sample size. Now, इसके basis पे एक formula बनेगा, that is how we can rely. So for relying, there will be a formula, that is standard deviation divided by root of number of observation, that will be discussed in later phase. Okay. So this is basically the first point known as law of statistical regulatory. Then Kharat Hemant is saying which topics are easy, my maths is weak. So see, do not worry. You have to focus on statistics first. Leave what has finished till here. But now you have to focus on statistics because statistics is very easy as compared to the maths part. To focus on this 40 marks now, and then I will suggest you like what you have to study and how you have to study so that you can score better. Okay, let us read the second number point. The results derived from a sample according to the principle of inertia of large number are likely to be more reliable, accurate, and precise as the sample size increases, provided other factors are constant. So this is basically the extension of point number one only. Point number one basically said if the sample size is more, then it would possess
मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, उससे पॉपुलेशन के ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगे। इसी बात को दूसरे अंदाज में कहा है इस पॉइंट नंबर बी में। तो दिस पॉइंट नंबर बी इज बेसिकली सेइंग प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। So this is basically the result of point number one. In point number one, we have taken large sample. Now, for after taking large sample, what is the result? Result is more accuracy. It will be more accurate. It will be more reliable. So we can rely on this data. So this is basically a direct consequence of the first sample, first principle. So these 2 points are connected. Okay. Now the third one, the principle of optimization ensures that an optimum level of efficiency at minimum cost. Now, what this point is saying, efficiency should be more and cost should be less. तो इन शॉर्ट, जब भी हम पैसा खर्च करते हैं हमारी पॉकेट में से, व्हाट इज अवर मेन इंटेंशन? वी मस्ट स्पेंड लेस एंड गेट मोर ऑफ द थिंग्स। हमें खर्चा कम करना है और रिटर्न हमें ऑलवेज ज्यादा मिले। दिस इज ऑलवेज अवर इंटेंशन। सेम अप्लाइज हियर ऑल्सो। कॉस्ट शुड बी लेस एंड एफिशिएंसी शुड बी मोर। तो सैम्पलिंग डिजाइन इस तरह से हो, लाइक कॉस्ट इन्वॉल्व इन टेकिंग द सैंपल शुड बी लेस and the sample should give efficient result. Like we must get the sample which is much more better, which can yield better result. Okay. Then point number D, principle of validity. Point number D is principle of validity. It states that sampling design is valid only if it is possible to obtain valid estimates and valid tests about the population parameter. So it is only possible if we get the valid result, if we reach to the actual data. So when we compare the sample result and the population result, if both are matching, that means our test is verified, our principle is valid. सो वैलिडिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि सैम्पलिंग डिजाइन तभी वैलिड होगी जब हमें वैलिड एस्टिमेट्स मिलेंगे, वैलिड तरीके से हम टेस्ट कर पाएंगे एंड प्रॉपर कंक्लूजन तक हम पहुंच पाते हैं। ओके, सो आई एम यूजिंग बोथ द लैंग्वेजेस, सो डू नॉट वरी। ऑलराइट। Okay, Hemant is again asking the same question. Please see, tell other topics. See, at present we are in the flow of this chapter, and I think you are not focusing on this chapter. So the first and foremost thing you must do is focus on the current topic, and all these extra things we will discuss at the end. Okay, you can ask this at 3:55, but at present you have to focus on this chapter only. Okay, next one. Comparison between sample survey and complete enumeration. Now, what is the meaning of this? So, when complete information is collected for all the units belonging to a population, it is defined as complete enumeration. So, when complete information is collected for all the units belonging to a population, it is defined as complete enumeration or census. The alternative name is census. Let's say there is a bulb manufacturing company, or you can take, let's say, there is some shirts manufacturing company. Shirt manufacturer is there, and he has manufactured 100 shirts. Now, we want to check the accuracy, the correctness of the shirts, like whether the dimensions are correct or not, whether the finishing is perfect or not, buttons are put in place or not, if there is any problem with that shirt or not. So we have to check each and everything. So 100 shirts are manufactured. If we want 100% accuracy, if the requirement is 100% accuracy, because the company is, let's say, very good. Let's talk about like BlackBerry.
Now, BlackBerry is very concerned to its brand name. So BlackBerry wants that each and every product should be tested thoroughly. So 100% accuracy is required. So for that, we will take all 100 shirts, check each and every shirt in detail. This process is known as complete enumeration. तो जब आपने पूरे की पूरे 100 शर्ट्स को अच्छे से चेक किया है डिटेल में, so this is basically known as complete enumeration, or you can say census. इसका दूसरा नाम क्या है? Census. Now census word you have read in many other places also. तो सेंसस का मतलब क्या होता है? कंप्लीट चेकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हर 10 साल में सेंसस रिपोर्ट बनाती है, राइट? गवर्नमेंट ऑल्सो प्रिपेयर द सेंसस रिपोर्ट इन एवरी 10 years, लाइक 2021, उससे पहले 2011, देन 2001 and so on. So this census report includes the data of the complete population. पूरे इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं उन सब का डेटा इस सेंसस रिपोर्ट में अवेलेबल होता है. So let's say the population is 135 crores. So this census report will include all the details of 135 crores. Then this will also include that out of this 135, what is the age group, then how many are children, how many are male, female, then transgender कितने हैं, married and unmarried कितने हैं, then literate and illiterate कितने हैं, what is their religion. So all such kind of data is included in this census report. So census report के अंदर हम किसी को मिस नहीं कर सकते हैं, everything will be included. So this is simply known as complete enumeration. Okay. Now, for this complete enumeration, what are the basic factors which we have to remember? So in most of the cases, we prefer sample survey. Now, in most of the cases, ज्यादातर हम क्या prefer कर रहे हैं? Sample survey prefer कर रहे हैं. Why we are preferring sample survey? Because in sample survey we can do work speedily. हमने कुछ randomly item को check किया और हमारा काम complete हो जाएगा. But in the census, we have to check each and everything in detail. So sample survey is speedy. Then it incurs less cost, but reliability will be less in sample. Reliability will be less in sample. So first factor is basically the speed. If you are comparing sample, and second one is census. So in sample, speed is more, and in census, speed is less. Cost. In sampling, cost will be less. In census, cost will be more. Because for collecting the data for 135 crores, so lakhs of people, or even you can say thousands of people are engaged in collecting the data in preparations of report. So we have to incur a lot of labor, lot of efforts, and lot of salary, other expenditures are incurred for collecting this data. Now, in sample, since we have tested only few commodities, so reliability will be less. It is less reliable, and census is more reliable. Same thing is accuracy. You can say the accuracy will be less in sample and it will be more in census. Okay. Now, in case of a sample, every time you take the sample, you will get the different result. You can get the different result. Like, let's say there are 1,000 people in a particular area, and they are doing different kind of jobs, business, everything. So now we have taken a sample of 20 persons and found the average income. The average income was, let's say, 40,000 rupees. Then again, we have taken 20 persons randomly from the same lot. This time,
average income we are getting is 24,000. Again, we have taken 20 more persons, and this time we are getting average salary of 52,000. That means अब जितनी बार सैंपल लेंगे उतनी बार आपका रिजल्ट चेंज होगा, उतनी बार रिजल्ट अफेक्ट होगा. But in case of complete enumeration, you will get only one figure, and that figure will be accurate. Okay, understood? So Divya is saying, in summary, does it mean census checking of each and every quantity? Yes. Census means checking each and every quantity in detail, and sampling means checking of some particular pieces, a partial portion from that. Then the last one, necessity. Sometimes samplings become necessity because there is no other way. The best example is blood test. Best example is blood test because it is necessary to take the sample. There is no other way to check. Now, practical life में हम घर के अंदर भी सैम्पलिंग को बहुत ज्यादा यूज करते हैं. We use sampling practically. If you talk about the kitchen में जब भी हम खाना बनाते हैं, when food is cooked, normally you might have seen, जब भी कोई सब्जी बन रही है, कोई वेजिटेबल बन रही है, उसमें नमक कम तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं है, तो वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, we take a small portion of small pinch of that vegetable or that part. So you take a small size of that part and you test whether it is salty or it is normal, क्या वो बराबर है, उसमें नमक सब कुछ ओके है, खटाई ओके है, मिर्ची ओके है. तो आपको पूरा की पूरा जो फूड बन रहा है उसको कंज्यूम नहीं करना है फॉर टेस्टिंग. यू हैव टू जस्ट चेक द स्मॉल मच, a small percentage. Let's say you have taken 1% of that, and 1% में आपको लगा yes, taste is okay, नमक बराबर है, that means you assume that the whole lot is perfect. तो हमारा assumption क्या है कि पूरा की पूरा lot सही है. Similarly, let's say if you are preparing some sweets आपने prepare कर लिया है, पूरा 1 kg आपके पास sweet बन रहा है, manufacture हो रहा है. Now you have to check whether the sweetness is more or less or it is accurate. So you can take a small piece from this and taste. So after tasting, you will find that if it is less sweet, then you can add some more sugar. If it is perfect, then you will assume that the whole lot is perfect. The whole lot is perfect. सो दिस इज द नेसेसिटी. ये जरूरी होता है और इसके अंदर कंप्लीट एन्यूमरेशन इज नॉट पॉसिबल. आपने पूरा 1 kg कंज्यूम कर लिया और फिर आप कहते हैं यार मीठा कम था. तो मीठा कम था तो अब उसका क्या करें हम. तो देयर इज नथिंग. देन हेमंत has given one more example, milk in sugar basundi. Yes, you can take many examples. Okay. So these are the 5 points. On the basis of this, we have to check whether we use census or we use sample survey. अगर आपको जल्दी है, आपको रिजल्ट जल्दी चाहिए, then of course you have to use sample survey. But if your main motto is accuracy, आपको accuracy से compromise नहीं करना है, then of course go for census. So according to our requirement, we choose the method. हम method को उसी के according select करेंगे. Now, the next point is errors in sample survey. Now, जब भी हम sampling की बात करते हैं, there are some fluctuations, there are some variations. Those variations, fluctuations are commonly known as errors. तो ऊपर हमने एग्जाम्पल लिया था, 20 का सैंपल लिया, एवरेज सैलरी कितनी आ गई पहले फर्स्ट टाइम, इट वाज 40,000, सेकंड टाइम 24,000, थर्ड वन इज 52,000. All these are known as sampling errors. सैंपल हमने इस तरह से ड्रॉ किया है कि every time it is misleading us, every time it is giving different result. Let's read this.
So sampling errors, since only a part of population is investigated in sampling. So every sampling design is subjected to this type of error. So since there is partial checking, so there is a sampling error involved. Now the factors contributing to the sampling errors. कौन कौन से factors हैं जो इसको affect करेंगे? First is errors arising out due to defective sampling design. Now the first point is error is due to डिफेक्टिव सैम्पलिंग डिजाइन. हमारा सैंपल लेने का तरीका ही सही नहीं था. अगर सैंपल लेने का तरीका ही सही नहीं है तो ऑफ कोर्स एरर होने के चांसेस ज्यादा होंगे. सो सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर सैम्पलिंग डिजाइन plays a crucial role in sampling. And if a non-probabilistic sampling design is followed, the bias or prejudice of the sampler affects the sampling technique, thereby resulting some kind of error. So again, take the initial example of a wheat bag. 100 kg ka wheat bag again available hai. Wheat is available in this bag. Now, you have just checked the quality from the top. आपने सिर्फ ऊपर के ग्रेन्स को देखा है और वहीं से क्वालिटी को आपने जज किया कि द होल बैग विल बी परफेक्ट. You haven't taken samples from middle, you haven't taken from bottom, you have simply just from the top. So this kind of sampling design is not correct. अगर आपका sampling design ही खराब है तो उसका रिजल्ट भी गलत आएगा. Okay? Second, errors arising out due to substitution. Now, very common practice among the enumerators is to replace a sampling unit by a suitable unit in accordance with their convenience when difficulty arises in getting the information from originally selected unit. And since the sampling design is not strictly adhered to, this result in some type of biasness. Now, we have selected that हम sample इस particular place से लेने वाले हैं, but उस place पे let's take this example only, wheat bag. So we have decided that we will take sample from the top, then from this place also. Now we tried inserting the tool from here, but this portion is very very thick and the tool is unable to plug inside. वो टूल यहाँ से एंटर नहीं हो रहा है. हो सकता है यहाँ पे कुछ थिक पोर्शन है या कुछ गांठ लगी है. देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन रिप्लेस दिस पोर्शन विद द अदर पोर्शन. वी कैन चेक फ्रॉम हियर. तो आपने उससे थोड़ा सा नीचे जाकर के वहां से चेक कर लिया. ओके, दैट मीन्स आपने जो पहले सिलेक्शन किया वहां से सैंपल लेना पॉसिबल नहीं है, तो आपने उसको इग्नोर करके कहीं और से सैंपल ले लिया. यू हैव टेकन सैंपल फ्रॉम अदर प्लेस. Okay, you have not compromised with the sample quantity. Sample quantity के साथ आपने compromise नहीं किया है. Simply you have changed the position. And इस position के change होने की वजह से there are chances of some errors. तो इसकी वजह से भी कुछ error occur हो सकती है. Okay. Now, the third one, errors owing to faulty demarcation of units. So it has its origin in faulty demarcation of sampling units. And in case of agriculture survey, the sampler has usually a tendency to underestimate or overestimate the character under consideration. तो कई बार हमारे माइंड में एक थॉट प्रोसेस चलता है और उस थॉट प्रोसेस के बेसिस पे हमारा एस्टिमेशन कई बार गलत हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आपके पड़ोसी ने तारीफ कर दी, लाइक यू कैन टेक दिस आइटम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वेंडर. आप एक पर्टिकुलर पर्सन के पास से ही लेंगे तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी. तो आपके माइंड में पहले से ही उसके लिए बहुत पॉजिटिव सिग्नल्स हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट दिस व्हीट बैग अगेन. पहले से आपके माइंड में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है, तो अब आप क्या करेंगे, इस व्हीट बैग के अंदर नेगेटिव ज्यादा नहीं ढूंढेंगे, बिकॉज योर माइंड इज टू मच पॉजिटिव फॉर दिस. So just because of those thoughts,
there might be some error. इट कैन बी अदर वे ऑल्सो, आपका माइंड बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो आपको हर जगह ज्यादा नेगेटिव दिख रहा है, सो इवन इट इज ओके, यू कैन रिजेक्ट दिस लॉट, आपका लॉट रिजेक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ एडिशनल नेगेटिविटी। ओके, तो एरर का मतलब क्या हो गया इन शॉर्ट, फ्लक्चुएशन, जो एक्चुअल है हम उससे थोड़ा सा दूर चले गए। सो 100 kg के बैग में आपको मान लो ये चेक करना है कि कितना उसमें कचरा निकलेगा, लेट्स से इट कैन बी अराउंड 0.5%। 0.5% आपने रैंडमली चेक किया, 0.5% जितना कचरा आपको नहीं दिखा, यू हैव एक्सेप्टेड। बट रैंडमली आपको 2-3% का कचरा दिख रहा है, दैट मीन्स यू विल रिजेक्ट। ओके, then D option, errors owing to wrong choice of statistics. So one must be careful in selecting the proper statistic while estimating a population characteristic. So again, the similar point that we have to choose the proper sample. Proper statistic आपको select करना पड़ेगा. If you have taken the wrong statistic, you will get wrong results. Okay. Next is point number 5, variability of population. So errors may occur due to variability among the population units beyond a degree. That means there is too much fluctuation in the data. उस data में बहुत ज़्यादा fluctuation है, and this could be reduced by following somewhat complicated sampling designs like stratified sampling and multi-stage sampling. तो जो हमने सैलरी या एवरेज इनकम का एग्जांपल लिया था, average income. So every time you are getting totally different result. One time you are getting, let's say 40,000. Next time you are getting 22,000. Then third time you are getting, let's say 51,000. So there is too much fluctuation in this. So when the population is scattered in this way, then the best thing we can do, we can take a different method of sampling. So the first is stratified sampling, and second method suggested is multi-stage sampling. Second one is multi-stage sampling. So these are the basically 5 points for sampling errors. So errors can arise due to sampling. Now, other will be non-sampling errors. Now, what are non-sampling errors? That means those errors which are not due to sampling design. They are not due to sampling design, but they are because of any other reason. कुछ errors ऐसी हो सकती है जो किसी दूसरे कारण से होगी, उसमें सैंपल से कोई लेना देना नहीं है. For example, we can take a simple health survey example. Health survey. Let's say there is a team entering the society for health survey. Now team उस society में गई है वहां के लोगों का health status check करने के लिए. So they are asking few questions and noting down the results. So what questions they are asking? They are asking the age, then they are asking the weight, height, okay, blood group. So everything they are asking. Now, अब उन्होंने किसी से पूछा like what is your age? What is your age? The person told 48. 48. But गलती से कई बार होता है सुनने में एरर हो जाती है. The person had written 58. बोला तो कितना है 48. लिखने वाले ने कितना लिख लिया 58. So this is not a sampling error. Okay, this is other type of error जो कौन सी कैटेगरी में है, नॉन सैम्पलिंग एरर के अंदर. देन हमने उसका वेट चेक किया, वेइंग मशीन पे उसको रखा एंड वेट चेक किया, वेट वाज लेट्स से 87 kg, बट देयर वाज फॉल्ट इन वेइंग मशीन. वेइंग मशीन में ही फॉल्ट हो गया.
तो वेइंग मशीन में फॉल्ट है, तो दिस इज नॉट fault of sampling design. This is the fault of machine. So all these type of faults are non-sampling errors. Then there can be some lapse of memory. हमने 10 क्वेश्चन एक साथ पूछे और उसके बाद में नोट डाउन करना शुरू किया। 10 क्वेश्चन में से कुछ के आंसर हम भूल गए, लिखना है भूल गए, या हमें याद नहीं रहा, तो लैप्स ऑफ मेमोरी क्रिएट्स अगेन सम काइंड ऑफ एरर्स। देन प्रेफरेंस फॉर सर्टेन डिजिट, हर किसी पर्सन के माइंड में कुछ प्रेफरेंस रहती है, वो ऑलवेज कुछ पर्टिकुलर डिजिट्स को ऑलवेज सेलेक्ट करता है, कुछ पर्टिकुलर को वो ऑलवेज इग्नोर करता है, सो दैट कैन बिकम अगेन द पार्ट ऑफ एरर। So all these are non-sampling errors. Now we are discussing the main terms, the key terms associated with sampling. So what are the key terms connected with sampling? जो main terms sampling से connected है, इसको study करते हैं। The first term is known as population or universe. Population का दूसरा नाम क्या है? Universe. So it simply means the whole of the thing under consideration. That means it covers all the units under consideration. So all the units are included. It is known as population or universe. Okay. This population can be finite or it can be infinite. Both the things are possible. Population can be finite or infinite. If the population is counted, it is countable. हम अगर उसको count कर सकते हैं, then it is known as finite population. Like number of cars manufactured in a day, number of mobile phones sold in a week. All these are countable. हम इसको count कर सकते हैं. तो जो भी चीज count हो सकती है, that is a part of finite population. Then the second will be infinite. If the population is uncountable, then it is known as infinite. So we can take the example of number of mosquitoes in a particular place. एक particular place में कितने mosquitoes हैं? Then number of stars in the sky, number of hairs on the head. All these are example of infinite population. Then Anushka has also given one example. Number of chapters in quantitative aptitude book is example of finite data. Perfect. Very good example, Anushka. So you have to be engaging like this. थोड़ा सा आप engage रहें, अपने आप भी कुछ examples बनाएं. You will feel good, you will feel creative, and you will be able to learn most of the things. Then population may also be existent or it can be hypothetical. Okay, population can be existent or it can be hypothetical. Existent means physical units are there, like number of cars, mobile phones. So all these are physical units, so they are existent. And hypothetical simply means assumption. Like if we toss 100 coins, then how many times head will appear? 100 times अपने कॉइन को टॉस कर दिया है. Now out of 100 कितनी बार हेड आएगा? So this is simply hypothetical. If you are tossing a dice, then how many times number 6 will appear? In 100 times you have tossed, how many times 6 will appear? So this is again hypothetical. The population can be classified as finite, infinite, existent, or hypothetical. Yes, Ariharan has also given some example. Number of water drops in bucket of water. That's good. Then Baswati Roy has also given number of leaves in a plant.
or a number of leaves in a tree. That's great. Infinite data. Then Sakshi is saying formula of maths is infinite. No, but practically that can be finite for you. Okay. Then Himanshu is saying color shades. Yes, color shades. There are thousands of color shades, and so it can be the part of infinite because you can mix and match anything and create a new color. So there are thousands and lakhs of different shades. Then Sakshi is asking what is the meaning of hypothetical. Hypothetical simply means assumption. assumption पे based है. assumptions के ऊपर बेस्ड है कि 100 में से कितनी टाइम हेड आएगा. जैसे normally what we say is in a coin there are only two parts, head and tail. So 50% chances of getting head and 50% chances of getting tail. So if you are tossing 100 coins, that means our hypothetical answer will be 50 heads and 50 tails. So this type of answer is known as hypothetical. So it is based on the probability. Okay. So it simply means imaginary, you can say. So this was the first term, that is population, or you can say universe. Now second term. Second term is the sample. Sample means the part of population which we are selecting for study. Part of population which is selected to represent the population. तो हमने पॉपुलेशन का एक पार्ट लिया है ताकि हम पॉपुलेशन को चेक कर सकें. You can check the correctness of that thing. So let's say there is a lamp manufacturing company. Total lamps manufactured are 1500. Now you have to check the correctness of lamps, whether it is okay or not. Then you have taken 500 units of lamp for checking, for inspection. That means one third you have taken for inspection. So this 500 out of 1500 is basically the sample, or you can say sample size. Next term is parameter. Now, what is the parameter? Parameter may be defined as the characteristic of population. You can highlight this. Parameter का मतलब क्या है? Characteristic of population based on all the units of population. It is based on all the units of population. So statistical inferences are drawn about population parameter based on the sample observation drawn from the population. तो यहाँ पे हम क्या कहना चाहते हैं? पैरामीटर का मतलब है उस पॉपुलेशन के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स. पॉपुलेशन के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक व्हाट इज द मीन ऑफ पॉपुलेशन, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन. तो ये सारा डेटा जो कि पॉपुलेशन का है उसी को ही हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर. ओके. And other term is known as statistic. So statistic shows characteristic of sample. Shows characteristics of sample. And parameter shows characteristics of
population. Okay, so you can remember P for P. Let's write here parameter. So now you can correct population का parameter sample के लिए statistics S for S, P for P. So if you want to know about the characteristic of sample, it is known as statistics. So mean of statistic, variance, standard deviation of of sample is known as statistic. Now, mean of population is denoted by the symbol mu. This is the symbol for mean of population. Whereas if you want to know population of mean of sample, it is x bar. It is x bar. Variance is denoted by neta square, and here you can write s square. Standard deviation is denoted by this neta, or you can say sigma, whereas for sample, standard deviation is denoted by s. So these are the common notations. These are the common notations. There is one more thing, that is proportion. If there is population proportion, capital P, and if there is a sample proportion, small p. Okay. So we have written the different notations. So the first thing is characteristic of population means parameter. Characteristics of sample means statistic. Then there are different notation so that we can understand whether this is talking about population or it is talking about the sample. Okay. Now we have written this, done this. Then sampling distribution and standard error of statistic. Now, what is sampling distribution and standard error? Okay, this topic will be somewhat big. So let's take a break first and then we will be continuing. Okay, so let's have a break of 10 minutes and then we will continue. Okay.
So, welcome guys. So, let's continue. तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड एरर के बारे में हमें बात करनी है अपना। तो कुणाल का क्वेश्चन है, प्लीज एक्सप्लेन इन हिंदी पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स। सी, पैरामीटर का मतलब है जो पॉपुलेशन के बारे में हमें जानकारी मिले कि पॉपुलेशन का मीन कितना है, पॉपुलेशन का वेरिएंस कितना है, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है। कोई भी एक्स वाई जेड जानकारी पॉपुलेशन के बारे में उसको बोलते हैं पैरामीटर। एंड स्टैटिस्टिक का मतलब है सैंपल के बारे में इंफॉर्मेशन, सैंपल के बारे में जानकारी कि उस सैंपल का मीन क्या है, सैंपल का वेरिएंस कितना है। कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सैंपल इज नोन एज स्टैटिस्टिक। ओके, नाउ sampling distribution, starting with the population of capital N units. Now, number of units in a population is denoted by capital N. तो कहीं भी अगर कैपिटल एन लिखा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन साइज। एंड स्मॉल एन मीन्स सैंपल साइज। स्मॉल एन आपका सैंपल साइज कहलाता है। ओके, so in case of sampling with replacement, the total number of samples that can be drawn is, when it comes to without sampling, then now there are two different methods in which we can calculate the size. So the formula for that is NCN. NCN. Let's say there are 10 observation in population and out of those 10 we are selecting only 2। तो कितने तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं? तो आंसर विल बी 10C2। नाउ कॉम्बिनेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा हाउ टू सॉल्व 10C2। 10 into 9 upon 2, that is 45। so there are 45 ways in which sample can be selected। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर हमने क्या किया है, कैपिटल एन का मतलब है पॉपुलेशन साइज एंड दैट इज 10। स्मॉल एन का मतलब है सैंपल साइज विच इज 2 हियर। नाउ कितने तरीके से आप सैंपल निकाल सकते हैं? तो योर आंसर विल बी 10C2। 10C2। नाउ दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर विदाउट रिप्लेसमेंट। दिस इज अप्लाइड फॉर विदाउट रिप्लेसमेंट। नाउ ये विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है ये भी अभी हम समझ लेंगे। तो पहले हम दूसरा फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। विद रिप्लेसमेंट, द फॉर्मूला इज कैपिटल एन टू द पावर ऑफ स्मॉल एन। कैपिटल एन टू द पावर ऑफ स्मॉल एन। सी का मतलब हो गया कॉम्बिनेशन एंड विद रिप्लेसमेंट में आपका फॉर्मूला है कैपिटल एन टू द पावर ऑफ स्मॉल एन। ओके, सो लेट्स टेक 10 units A, B, C, D, E, F, G, H, I and then J। So these are 10 units। अब इस 10 में से हम टू कौन से सेलेक्ट कर सकते हैं? कैन बी एनी टू, A and B, A and C, anything, B and C, C and D, E and G, E and H, anything। So in ऐसे कितने टोटल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? द फॉर्मूला फॉर दैट इज 10C2। तो 10C2 आपने अप्लाई किया, देयर आर 45 पॉसिबिलिटीज। इतने तरीकों से आप सिलेक्शन कर सकते हो। दिस इज नोन एज विदाउट रिप्लेसमेंट। एक बार अगर ए आ चुका है फर्स्ट पोजीशन पे तो सेकेंड टाइम वापस ए नहीं आ सकता है, बिकॉज ए इज ऑलरेडी यूज्ड। ए इज ऑलरेडी यूज्ड। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट विद रिप्लेसमेंट, ए को आपने सेलेक्ट किया, वापस अपनी पोजीशन पे अंदर रख दिया, तो हो सकता है सेकेंड टाइम भी ए का सिलेक्शन हो जाए। बी है तो सेकेंड टाइम भी हो सकता है बी का सिलेक्शन हो जाए। तो दिस काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज आर पॉसिबल, देन इट इज नोन एज विद रिप्लेसमेंट। सो इन केस ऑफ विद रिप्लेसमेंट द फॉर्मूला इज कैपिटल एन टू द पावर ऑफ स्मॉल एन। So 10 to the power of 2, it will become 100। It will become 100। So two formulas you have written. One is without replacement and second is for with replacement।
Now I am giving you question. You have to solve and let me know the answer. Capital N is 5. Small n is 3. Now you have to find out without replacement and with replacement. So you have to give both the answers without replacement and with replacement. Come on, everybody, give the answer. So for without replacement, it will be 5C3. So 5 into 4 into 3 upon 3, 2, 1. The answer will be 10. And in case of with replacement, it is 5 cube. That is 125. 125. So Tameshwari has given the correct answer. Himanshu Sharma has also given. Then Hitesh, Muskan. Yes, everybody is correct. These two are your correct answers. So if we compute the value of statistics, let's say mean, it is quite natural that value of sample mean may vary from sample to sample, as sampling units of one sample may be different from another sample. So this we had already discussed. जितनी बार आप sample select करेंगे, उतनी बार आपका average different आएगा, उतनी बार आपका result differ करेगा. So the variation in the values of statistic is termed as sampling fluctuation. तो इस वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन. सो अगेन रिकॉल दैट एग्जांपल. एवरेज इनकम इन अ पर्टिकुलर एरिया. फर्स्ट टाइम सैंपल लिया, एवरेज इनकम 40,000. सेकेंड टाइम सैंपल लिया, एवरेज इनकम 22,000. थर्ड टाइम फिर से सैंपल लिया, एवरेज income 55,000. So every time the average is different. So this type of variation, ये जो वेरिएशन आ रहा है, ये वेरिएशन किसमें है? इन द वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक, एंड दिस इज टर्म्ड एज सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन. तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन. ओके. Now, all those students who have not yet completed permutation and combination, so they will find difficulty in solving this combination part. Okay, तो I will suggest कि पहले आप combination को complete करें, उसके बाद में ही यहाँ पे ये वाला formula आपके लिए usable होगा. Okay. So let's take one more example. This time capital N is 7 and small n is 2. So without replacement. So out of 7 objects, you have to select only 2. So what you have to write? 7C2. Now reverse order from 7, 7 into 6. And reverse order from 2, 2 into 1. So what is the result? 21. This is without replacement. If you require with replacement, to 7 to the power of 2, that is 49. Okay. So Divya says understood. Now, next is the formula for standard error. So it is possible to obtain the value of statistic from all possible samples of fixed sample size along with the corresponding probabilities. Okay. Now, question अब यहाँ पे next point जो हमारा है, that is overall जितना भी fluctuation है, उससे आप एक error को calculate करते हैं, and that error is known as standard error. So let's read this point. The mean of statistic obtained from its sampling distribution is known as expectation, and the standard deviation of statistic is known as the standard error.
तो दो लाइन यहाँ पे कही गई है. द फर्स्ट पॉइंट स्टेटेड दैट द ऑफ statistic mean of statistic is known as expectation because this is not the actual data. ये एक्चुअल डेटा नहीं है, ये हमने एस्टिमेट किया है. दिस इज द एस्टिमेटेड डेटा, देयरफॉर इट इज नोन एज एक्सपेक्टेशन. दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू. एंड जो भी फ्लक्चुएशन आपको दिख रहा है, जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिखता है, दिस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ statistic standard deviation of statistics is known as standard error. इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड एरर. ओके. नाउ हाउ टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर? So there are two formulas for that. The first is standard error for mean and second one is standard error for proportion. So I will write here standard error of mean. Now again we are dividing it into two parts. First is when population is infinite. When population is infinite, or you can say capital N is unknown, capital N is not available. First case क्या है? जब population infinite है और you can say capital N is not available. Then standard error of mean. For mean you are writing x bar. So standard error for mean is equal to neta upon root n. Standard deviation divided by root of n, you get standard error. And secondly, if the population is finite, or you can say capital N is available, capital N available N, then your formula will be neta upon root n. This is same. Now you have to multiply with a factor. आपको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है. Now what is that factor? Capital N minus small n divided by capital N minus 1. इससे आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. तो दीज आर द टू फॉर्मूलाज. पहले आप इन दो फॉर्मूलेज को अच्छे से नोट डाउन कर लें. उसके बाद हम इसका एक एग्जाम्पल बना लेते हैं. वी क्रिएट वन एग्जाम्पल ऑन दिस एंड देन सॉल्व. So let's say the standard deviation given is 5 and number of observations given are, let's take 100. Capital N is not available, so you have to find standard error for mean. So according to formula, 5 divided by root of 100. So it will be 5 upon 10, that is 1 by 2, or you can write 0.5. This is your standard error. So in this way, you will get your standard error. All right. So Anuj has got the answer. Anuj का आंसर आ चुका है. बाकी सब लोग भी चेक कर लें क्या ये फॉर्मूला आपको समझ आया, किस तरह से फॉर्मूले को अप्लाई करना है. Let's take one more. This time standard deviation is 2. N is 25. Capital N. Capital N is 100. Now you have to calculate the standard error. So it is 2 divided by root of 25 because it is root of small n. Multiply by capital N is 100, small n is 25
upon 100 minus 1. So let's simplify. 2 upon 5 multiply by. Now you can solve this. 75 divided by 99 and then square root into 2 divided by 5. So what you are getting is 0.348. 0.348 is your standard error. All right. तो इनफाइनाइट का सिंपली मतलब क्या है, नीटा अपॉन रूट एन, एंड फाइनाइट का मतलब होगा नीटा अपॉन रूट एन मल्टीप्लाई बाय द फैक्टर. Okay, and what is the meaning of standard error? Standard deviation of statistic is known as standard error. This is the very simple definition. Okay. Now one more thing for this, the factor root n minus n upon root n minus 1 is known as, you have to learn the name of this factor. This is known as finite population correction, FPC, or you can write finite population multiplier, and may be ignored as it tends to 1 if sample size is very large or population under consideration is infinite. So this we have done in the formula. If the population is infinite, we have to ignore this factor. So we have ignored this factor in the first case. Okay. Now let's write the second, standard error for proportion. Standard error for proportion. So SE in bracket, you can write P. Now the formula is root of P into Q divided by N. This formula is applicable for, again, infinite. This formula is for infinite. Infinite means when capital N is not available. Or you can say it is also known as with replacement. It is also known as with replacement. So formula is simply root of P into Q divided by N. And second portion is the finite. So for finite, we have to multiply with the factor. Factor is same, root n minus n upon n minus 1. So you have to multiply by this factor. So this will be the case of finite. Okay, or it is also known as without replacement. Without replacement. So let's take one example based on this. So let's say P is given 0.4. So what will be Q? So P plus Q is always equal to 1. P plus Q is always equal to 1. If P is 0.4, Q will become automatically 0.6. Okay, the sum of P and Q is always 1. N is available. N is, let's say, 10, or you can write 36. Now, you require standard error of proportion. So apply the formula. 0.4 into 0.6 divided by 36. So 0.4 into 0.6 divided by 6.
you are getting 0.04. 0.04. This is your standard error of proportion. And let's say all other figures are same and capital N is available. Capital N is, let's say, 64. So additionally, what you have to do? Simply multiply by root of 64 minus 36 upon 64 minus 1. Simply additionally multiply by this and you will get your answer. Okay. You can solve this and give the answer. उसको फटाफट सॉल्व कर ले एंड उसका आंसर सबमिट कर दे. Done till here? Okay. Now let's take one example. 13.2.1. A population comprises the following units: A, B, C, D, and E. So there are 5 units in the population. Draw all possible samples of size 3 without replacement. Size is 3. So what is given? N is 5. Capital N is 5 because it is population. Small n is 3 and you have to solve without replacement. So 5C3 and 5C3 is 10. 5C3 is 10. Okay. So in this way, you can get your answer. All right, everybody. Understood? Any doubt till here? Okay, perfect. Second, 13.2.2. A population comprises 3 members. 1, 5, and 3. Draw all possible sample of size 2 with replacement and without replacement. So you have to solve in both the ways. So with replacement will be 3 square, that is 9. And without replacement will be 3C2, that is 3. 3C2, that is 3. Okay. So Anushka says crystal clear, wonderful explanation. That's great. Thank you so much. Now, if let's say क्वेश्चन ने कहा होता फाइंड द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. फाइंड द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज. वैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है बट फिर भी अगर इसको डिस्कस करना है तो कैसे डिस्कस कर सकते हैं? लेट अस अंडरस्टैंड. क्वेश्चन ने क्या पूछा है? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इन बोथ द केसेस. तो फर्स्ट केस इफ वी आर टॉकिंग अबाउट विद रिप्लेसमेंट. So with replacement is 3 square, that is 9. So there will be 9 cases in total. So 1, 5 and 3. These are the 3 items of population. Sample में आपको सिर्फ इनमें से 2 काम में लेने at a time. You have to use only 2 things at a time. Like 1 and 1. With replacement है तो number repeat हो सकता है. तो 1 के साथ में 1, 1,5, 1,3. फिर 5 के साथ में 1, 5 and 3. 3 के साथ में 1, 5 and 3. तो ये सारे टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास आ चुके हैं एंड दीज आर 9. अब क्वेश्चन का इनका मीन निकालना है.
तो सबका पहले आपने क्या किया, मीन कैलकुलेट किया। 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज 1, 1 + 5 डिवाइडेड बाई 2 इज 3, 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2 इज 2। तो सबका आपने क्या किया है, मीन कैलकुलेट किया है। सो वी हैव कंप्यूटेड मीन हियर। मीन आपने कैलकुलेट कर लिया ना। देर आर इन टोटल 9 ऑब्जर्वेशन, मीन उसमें से आ चुका है। तो दिस इज द कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपका क्या आ चुका है, पूरा कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, दिस कैन बी रिटन एज एक्स बार एंड देन द प्रोबेबिलिटी। एक्स बार में क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है, 1 2 3 4 एंड 5। सो 1 2 3 4 एंड 5, इसके अलावा और कोई वैल्यूज नहीं। वन कितनी बार है, ओनली वन टाइम। So it is 1 out of 9. Total 9 cases है, and number 1 is repeated only once. This is repeated only once. So only one time you have written 1/9. Number 2. Number 2 is coming 2 times. So you can write 2/9. Number 3 is coming 3 times. So you can write 3/9. Number 4. 4 is coming 2 times. You can write 2/9. Number 5 is coming only once. So you can write 1/9. This is your distribution. This is your sampling distribution. But yes, this is of course not relevant for MCQs, but this is just a basic concept which we have discussed. नाउ अगर आपको सेकंड केस में जाना है विदाउट रिप्लेसमेंट, तो विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब नंबर रिपीट नहीं होगा। सो ओनली 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर, 1,3, 1,5 एंड 3,5। यू कैन नॉट राइट 3,1 5,1, इसको उल्टा आप नहीं लिख सकते हैं। ओनली दीज आर द 3 पॉसिबिलिटीज। नाउ कैलकुलेट द मीन। 1 + 3/2, 1 + 5/2, and 3 + 5/2. So 2, 3, and 4. Now you have to write all the possibilities. 2, 3, 4, 1/3, 1/3, and 1/3. Why 1/3? Because there are 3 cases in total, and out of these three, anything can occur. तीनों में से कोई भी इवेंट अगर हो सकता है। Therefore, सबके इवेंट के अगर होने के चांसेस कितने होंगे, 1/3. So you have written this distribution. All right. Now, if question says find out the expected value, वैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू आपका कवर होगा इन द टॉपिक प्रोबेबिलिटी, वहां पर हम करेंगे। बट अगर क्वेश्चन आपको कहता है फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, सिंपली मल्टीप्लाई दीज टू, 1/9, 4/9, 9/9, 8/9, and 5/9. Then add them. It is 27/9. That is 3. This is expected value of x. This is the expected value, which is 3. तो एक्सपेक्टेड वैल्यू को आप इस तरफ से सॉल्व कर सकते हैं। ओके। नाउ if you want to calculate expected value of x square, then you can also solve that also. Expected value of x square. So what you have to do, p into x square. Simply multiply x with px. 1/9, 8/9, 27/9, 32/9, and 25/9. Now you can add them. So it is 9 + 27, 36.
plus 32 is 68, plus 25 is 93. So 93 upon 9. In that way, you can get your answer. Okay. So you can write here 93 upon 9. If you cancel, you are getting 31 by 3. So this is expected value of x square. This is expected value of x square. So this we have done. So let's take the next topic. Yes, this is again a different topic, but yes, it is again scoring. Types of sampling. So sampling can be divided into mainly three parts. One is probability sampling, second is non-probability sampling, and third one is mixed sampling. So probability sampling का क्या मतलब है? Where हम probability का यूज करते हैं. Probability का यूज करना मतलब each and every object is having the equal chance of getting selected. हर किसी observation के select होने का chance equal है. Let's say there are 50 students in a class and उनको किसी competition में part लेना है, तो हम randomly किसी को भी select कर सकते हैं. That means each and every student has equal opportunity of being selected. So that is known as probability sampling. So there is always a fixed or pre-assigned probability for each member of the population to be a part of the sample taken from the population. So each and every one is having the equal probability of being selected. So this simple thing is known as SRS, simple random sampling. SRS is simple random sampling. तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है एक ग्रुप है, उस ग्रुप में 50 मेंबर्स हैं, 50 में से आपको रैंडमली किसी को भी सेलेक्ट करना है. दैट मींस ईच एंड एवरीबॉडी इज हैविंग द इक्वल चांसेस. तो इफ देयर आर 50 पर्सन्स, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 1 by 50. It will be 1 by 50. If there are 10 persons, then it will be 1 by 10. If there are n persons, then probability will be 1 by n. 1 by. So total of probability is always equal to 1. Probability का total always कितना होता है? 1 होता है. So SRS, when units are selected independent of each other in such a way that each unit belonging to population has equal chance of being the part of sample. हर किसी observation के select होने के chances equal है. That is known as SRS, simple random sampling. Now, this method is applicable, or this sampling method is applicable for those population where variation is less. जहां पे population कैसी है? Identical है. तो population must be identical. And population must be large. Population must be large. So when population is large and identical in all respect, then in that cases we use SRS, simple random sampling. Now, large means average, basically not too much of data and not too less of the data. It is an average. Then simple random sampling is completely free from samplers biases. तो जो इन्वेस्टिगेटर है उसकी बायसनेस यहाँ पे नहीं आती है, बिकॉज टोटल रैंडमनेस इज इन्वॉल्व. तो ऑल द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस बेस्ड ऑन दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग. तो मोस्ट ऑफ द टेस्टिंग जो हम करते हैं वो इसी मेथड से करते हैं, बिकॉज दिस मेथड इज अनबायस्ड.
ये मेथड कैसा रहता है, अनबायस्ड रहता है, तो ये मेथड को हम यूज करते हैं। ओके, नाउ द सेकेंड वन, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का यूसेज कब होगा? व्हेन द पॉपुलेशन इज लार्ज एंड हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब पॉपुलेशन में वैरायटी है, अलग अलग तरह के लोग उसके अंदर इन्वॉल्व है, देन वी यूज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास में हमारे पास बहुत तरह के स्टूडेंट्स हैं, उसमें 90 प्लस वाले भी हैं, 80 टू 90, 70 टू 80, 60 टू 70, बिलो 60, तो बहुत सारी वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है। तो जब इतने वेरिएशंस हमारे पास अवेलेबल हैं, सो इट इज ऑलवेज बेटर to select stratified sampling method. So in this method, what we have to do, we have to group all these according to their characteristic. More than 90% वाले को आपने अलग कर दिया, then you have taken 80 to 90, then you have taken 70 to 80, 60 to 70, 50 to 60, and then below 50%. We have segregated the population according to this characteristics. Okay, so now there are six partitions, six blocks. Each and every block is known as strata. Each and every block is strata. Now let's say you want 12 samples in total. 12 samples आपको चाहिए. So what we can do? We can take randomly two from each. So it will make 12. सब में से आपने 2 सैंपल सेलेक्ट कर लिए, इट विल बिकम 12 सैंपल्स। तो जो भी आपने 12 सैंपल लिया है, इट विल इंक्लूड ऑल द वैरायटी। तो ये मेथड यूज करने का मेन एडवांटेज क्या है? ऑल वैरायटी विल बी कवर्ड इन दिस मेथड। बट अगर इस मेथड की जगह आप एसआरएस यूज करते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज करते हैं, तो हो सकता है कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टूडेंट इसमें कवर ना हो पाए। बट इन दिस मेथड ईच एंड एवरी वैरायटी विल बी इंक्लूडेड। So you have to select from each and every strata. So the purpose of stratified sampling is to make representation of all the subpopulation. तो हर variety इसमें आ गई. Second is to provide an estimate of parameter, not only for all the strata, but also an overall estimate. तो ऐसा करने से आपके पास क्या क्या हो गया? दोनों चीजें आ गई, इंडिविजुअल स्ट्रेटा के बारे में भी पता लग गया एंड ओवरऑल टोटल के बारे में भी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। सो दैट्स व्हाई दिस मेथड इज बेटर। So there are two types of allocation of sample size. So when there is a prior information that there is not too much variation between the strata, we consider proportion allocation और बाउलेज allocation. जब वेरिएशन ज्यादा नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, when variation is not much, then you can use which method? It is proportion allocation or you can say बाउलेज allocation. बट व्हेन स्ट्रेटा वेरिएंसेस डिफर सिग्निफिकेंटली, उसमें डिफरेंसेस ज्यादा है, देन वी टेक नीमेंस अलोकेशन। तो नीमेंस का अलोकेशन का मेथड हमें यूज लेना है। नाउ सैम्पलिंग इज एक्चुअली टू बिग टू वाइड, बट हमारे सिलेबस में सिर्फ एक इंट्रोडक्शन टू सैम्पलिंग गिवन है एंड नथिंग एल्स। ओके, तो यहाँ पे डिटेल में नहीं, बस सिर्फ एक कुछ टर्म्स आपको याद रखने हैं, कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, दैट्स इट। So if variation is less, use Bowley's allocation. If variation is more, use Niemann's allocation. Okay. तो stratified sampling is not advisable if, कहाँ पे यूज नहीं लेना है? जहां पॉपुलेशन बिग नहीं है, यू कैनॉट यूज। सम प्रायर इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप उस ग्रुप को डिवाइड कैसे करोगे? अगर आपके पास स्टूडेंट्स के मार्क्स नहीं है, तो आप इस तरह से सेग्रीगेशन कैसे करोगे? तो उसके लिए मार्क्स का होना जरूरी है। So some prior information must be available to apply this method. And there is not much heterogeneity. If सारे के सारे लोग एक ही कैटेगरी में से हैं, हम उसको सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं। So therefore, population
should be heterogeneous. This is stratified sample. Next is known as multi-stage sampling. Multi-stage means you have to take sample or you have to do selections at each and every stage. हर stage पे आपको selection करना है. So for example, if you want to go on a vacation, आपको vacation पे जाना है. Now vacation पे जाने के लिए you are planning that कौन सी country में हम जाएं. So there are 200 countries. तो 200 countries में से आपको कुछ countries को select करना पड़ेगा. Let's say you have selected 5 countries, 5 small countries. तो इन पांचों कंट्री में आप विजिट करेंगे या फिर इनमें से 1 या 2 कंट्री को आप विजिट करेंगे. Now, so you have selected this first stage sample. Now comes the second stage. जो कंट्रीज आपने सेलेक्ट की है उस कंट्री के अंदर कौन कौन सी सिटीज के अंदर हम जाने वाले हैं. तो उसकी सिटीज आपको फाइनलाइज करनी है. सिटी नंबर 1, 2, 3. देन थर्ड स्टेज विल बी उस सिटी के अंदर बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स होंगे, बहुत सारे मार्केट प्लेसेस होंगे. सो वेयर यू हैव टू गो. तो अगेन वो आपको सेलेक्ट करना है. सिटी नंबर 1 में ये प्लेस है, सेकंड प्लेस, थर्ड मार्केट, फोर्थ मार्केट, एंड सो ऑन. सो यू हैव टू टेक सैंपल एट ईच एंड एवरी स्टेज. हर स्टेज पे आपको सिलेक्शन करना है. सो दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज नोन एज मल्टी स्टेज सैम्पलिंग. मल्टी स्टेज सैम्पलिंग. नाउ लेट्स से किसी एक पर्टिकुलर सिटी में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कहीं पे अर्थक्वेक है या कहीं पे लेट्स से लॉकडाउन लगा है या कोई भी प्रॉब्लम है जो आपने सेलेक्ट किया है. तो हम क्या करेंगे, उस सिटी को छोड़ के कोई दूसरा सिटी हम सेलेक्ट कर लेंगे. दिस शोज दैट देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी इन दिस मेथड. इस मेथड में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है. अगर किसी सैंपल को हमने सेलेक्ट किया, उसको बारे में पता लगाना पॉसिबल नहीं है, वहां जाना पॉसिबल नहीं है, यू कैन चेंज द सैम्पल, यू कैन चेंज दैट सैम्पल. So this is known as multi-stage sampling. So this is a very again good method, but population is quite large. It also saves computational labor. It is cost effective. It is flexible when we compare the other methods. So बाकी method के comparison में this is a very flexible method. But it is quite less accurate. इसमें accuracy थोड़ी कम होगी because we are taking sample at multiple stages. तो जितने ज्यादा सैंपल हम लेंगे उतना, जितने प्लेसेस पे हम सैंपल लेंगे उतना वेरिएबिलिटी आपको मिलेगा. Then the next one is systematic sampling. So it is basically a mixed part of sampling. That means we use probability in some portion and we do not use probability in the other portion. जैसे there are, let's say, 100 people and they are arranged in this way. इस तरह से पूरी पॉपुलेशन क्या है आपके पास, अरेंज्ड है. You have to take few sample from this. तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में व्हाट वी हैव टू डू, यू हैव टू प्रिपेयर अ सिस्टम. हमने एक सिस्टम बना लिया. फर्स्ट रो में से रैंडमली किसी को सेलेक्ट किया. नाउ आवर सिस्टम इज पिक नेक्स्ट 7. जो भी नंबर आया उसमें 7 प्लस करें एंड उसको सेलेक्ट कर लें. तो 3 + 7 gives 10, 10 + 7 gives 17, then 24, then 31, 38, and so on. So every seventh unit is selected. This is the system. ये हमने सिस्टम बना दिया. This is known as systematic sampling. So this is fast way of selecting the sample. काफी फटाफट आपका काम हो सकता है. But if the population is arranged, अगर population arranged है और सिस्टम हमारा गलती से ऐसा बन गया कि एक ही टाइप की पॉपुलेशन उसमें कवर हो गई, देन इट विल रिजल्ट द बायस्ड रिजल्ट. फॉर एग्जांपल 1, 11, 21 इन सारी प्लेसेस पे कौन लोग बैठे हैं, जो रिचेस्ट है. देन थोड़ा कम एंड 10 पे है पुअर पीपल. ओके,
नाउ अपना सिस्टम ये बन गया, एवरी 10th यूनिट इज सेलेक्टेड, so 3, 13, 23, 33, दैट मीन्स सारी वो वैरायटी जो एक ही पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करती है वो सेलेक्ट हो गई। सो इट विल गिव कंप्लीट बाइज रिजल्ट। इसमें सारी वैरायटी इंक्लूड नहीं हो पा रही है, so दिस इज द प्रॉब्लम इन दिस मेथड। तो ये इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। ऑलराइट, so systematic sampling is very convenient method of sampling when a complete and updated sampling frame is available। तो मेथड आसान है, लेकिन एक प्रॉपर फ्रेम आपको बनाना पड़ेगा। एंड ड्रॉबैक सिर्फ इतना ही है, अगर आपका इंटरवल प्रॉपर सिलेक्ट नहीं हुआ, इट विल गिव यू द बाइस्ड रिजल्ट्स। ओके, अंडरस्टूड टिल हियर? नाउ देयर इज लास्ट वन मोर मेथड दैट इज नोन एज पर्पसिव और जजमेंट सैम्पलिंग। पर्पसिव और जजमेंट सैम्पलिंग, हमें सैंपल तो सेलेक्ट करना है बट अकॉर्डिंग टू आवर पर्पस, जिसमें हमारा पर्पस सूट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी क्विज कंपटीशन के लिए आपको 2 स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने हैं फ्रॉम द क्लास, एंड इन अ क्लास देर आर 50 स्टूडेंट्स इन टोटल, एंड यू हैव टू सेंड 2 स्टूडेंट्स फॉर द क्विज। तो क्या आप किसी को भी रैंडमली उठा करके क्विज में भेज देंगे? नो। आपको कैसे सिलेक्शन करना रहेगा कि क्लास के जो सबसे दो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, जो सबसे इंटेलिजेंट है, उसको आप सिलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द पर्पस। जो हमारा पर्पस है उस पर्पस के लिए आप सिलेक्ट करेंगे। अगर डांस कंपटीशन है तो जो बेस्ट डांसर है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो जो हमारी कंडीशंस को मीट करता है, दैट विल बी सिलेक्टेड। तो दिस इज नोन एज पर्पसिव सैम्पलिंग। तो इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग, बिकॉज हमें यहाँ पे कोई प्रोबेबिलिटी का यूज नहीं करना है, रैंडम सिलेक्शन नहीं करना है। राइट, ओके। So now let's come on the exercise questions and have the rapid fire round. तो फटाफट रैपिड फायर में क्वेश्चंस एंड आंसर को सॉल्व करते हैं। The first one is sampling can be described as a statistical procedure. तो सैम्पलिंग किसके लिए यूज होता है? A says to infer about the unknown universe with the help of sample. A ठीक लग रहा है। सेकंड, टू infer about known universe, जो यूनिवर्स हमें पता है उसके बारे में तो क्या पता लगाएंगे? नो, बी इज रॉन्ग। सी, टू infer about unknown universe from knowledge of a random sample drawn from it. Yes, तो हम नॉर्मली रैंडम सैंपल को सेलेक्ट करते हैं टू ड्रॉ द कंक्लूजन। तो ए ठीक लग रहा था लेकिन सी परफेक्ट लग रहा है, दिस इज द डिफरेंस। तो आपको हमेशा परफेक्शन की तरफ जाना है। सी इज योर करेक्ट आंसर। सेकेंड, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलेटरी सेज दैट, कौन सा ऑप्शन सही है? यस, ऑप्शन नंबर सी, अ लार्ज सैंपल ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम पॉपुलेशन, लार्ज सैंपल ड्रॉ किया, विल possess द कैरेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन ऑन एन एवरेज। तो जितना ज्यादा पॉपुलेशन सैंपल का साइज होगा उतना एक्यूरेसी रहेगा। सैंपल सर्वे इज प्रोन टू, कौन सी एरर हो सकती है? सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग, बोथ, ए एंड बी। पॉपुलेशन ऑफ रोजेस इन अ सॉल्ट लेक सिटी, एक सिटी में रोज कितने ग्रो हो रहे हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल टू काउंट, इट इज अ पार्ट ऑफ इनफाइनाइट पॉपुलेशन। 5, statistical decision about an unknown universe is taken on the basis of, तो हमें कोई डिसीजन लेना है अननोन यूनिवर्स के बारे में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्जर्वेशंस देखने पड़ेंगे, लाइक हाउ मेनी observations are available, and accordingly you can take the decision. Random sampling implies, random मतलब लॉटरी सैम्पलिंग भी बोल सकते हैं, और यू कैन से probability sampling also. So which is better? Better option is D, sampling with the same probability for each unit. हर किसी ऑब्जर्वेशन के सेलेक्ट होने के चांसेस क्या रहेंगे? इक्वल। Then 7, a parameter is a characteristic of P for P, population.
statistic is a function of sample observation or population units, characteristic of population or a part of population. So which one will be correct? Option number A. सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन में बी डिस्क्राइब्ड एज सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का मतलब क्या है स्टैटिस्टिक का जो रिजल्ट आता है उसमें वेरिएशन तो वेरिएशन इन द वैल्यूज ऑफ स्टैटिस्टिक इज नोन एज सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन 10 सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आपको बनाना है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक स्टैंडर्ड एरर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज स्टैंडर्ड एरर का मतलब क्या होता है स्टैंडर्ड डिविएशन किसका स्टैटिस्टिक का ऑप्शन नंबर डी 12 a measure of precision obtained by sampling is given by स्टैंडर्ड एरर की कितना एक्यूरेसी है या नहीं है वो किससे पता लगेगा एरर से एरर ज्यादा है दैट मींस एक्यूरेसी इज लेस 13 as sample size increases in standard error decreases तो एरर कम होगा एक्यूरेसी बढ़ेगी 14 from a population of 25 members a sample of 2 without replacement is taken तो without replacement है you can use 25C2 so 25 into 24 upon 2 you will get 300 option number A okay next one 15 a population comprises 5 members so 5 members are there number of all possible sample of size 2 yes फटाफट इसका आंसर बता दें Anuj has given the answer Anushka and Anusa has given the answer so all three Anus are giving the answer Anuj Anushka and Anusa so 5 members 2 samples and it is with replacement so 5 to the power of 2 25 option number D okay so Muskan is correct Nancy Anusa Tameshwari Divya Anuj perfect 16 simple random sampling is very effective if कब effective होगा SRS when population is not much heterogeneous जब population बहुत ज्यादा heterogeneous नहीं है या not very large ज्यादा large नहीं है तो कौन सा ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे विच वन इज बेटर फॉर क्वेश्चन नंबर 16 करेक्ट विल बी ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं एसआरएस के हैं तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट 17 सिंपल रैंडम सैम्पलिंग simple random sampling is a probabilistic sampling because we use probability here according to Neimann's allocation yes in stratified sampling तो sample size किससे proportional होती है population size से small n is proportional to capital N so n के बारे में कौन बता रहा है n that is Neimann's small n is proportional to capital N given by n that is Neiman right 19 which sampling provides separate estimate for population means for different segments and also an overall estimate so individual segment का भी हमें पता लगता है plus overall so this we have done in stratified sampling so we get to know about each and every strata as well as overall this is stratified sampling
विद सैम्पलिंग एड्स फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ पे है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। 21 with sampling is affected most if sampling frame contains an undetected periodicity। तो कौन सा मेथड सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा, इफ देर इज अनडिटेक्टेड पीरियोडिसिटी, हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, इफ प्रॉपर थिंग्स आर नॉट अवेलेबल, देन सिस्टमैटिक, नो व्हेन देर इज अ प्रॉब्लम फॉर अनडिटेक्टेड पीरियोडिसिटी, दैट इज इंटरवल का प्रॉब्लम है। इंटरवल का प्रॉब्लम है, दैट मीन्स एक जैसी पॉपुलेशन हर बार सेलेक्ट हो रही है, दैट मीन्स दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। 22 which sampling is subject to discretion of sampler, जो सैम्पलर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करता है, दैट इज पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पस के अकॉर्डिंग जो हमारा सिलेक्शन होता है, दैट इज पर्पसिव। 23 sample size is 2, population size is 3, and there is, which option will be correct? So 3C2, or you can say 3 square. It is with replacement. With replacement will be 3 square, that is 9. So you have to see which of the option is correct. A and B are rejected. Now check out of C and D which one is correct. Option number D, 1 and 1 is getting repeated. So of course this is wrong. Option C covers all the arrangements. Option number C में सारे arrangement आ चुके हैं. Okay. Then 24. If a random sample of size 2 is taken without replacement from a population containing the units A, B, C and D, then the possible samples. तो without replacement है, without replacement के अंदर आप क्या करेंगे? It is NCN. So 4C2. 4C2 will be 6. 4C2 will be 6. So check which of the following option is correct. A is wrong, B is wrong, C and D both are having 6 options. But in C, A, D and D are getting repeated. So C is wrong and D will be correct. D will be correct. Okay. So we have done all the variety of questions. बुक में हो सकता है एक दो क्वेश्चंस आगे पीछे मार्क कर रखे हैं, बिकॉज दिस चैप्टर इज न्यूली एडेड, सो देयर माइट बी सम एरर्स, बट वी हैव डिस्कस्ड, so that अगर कोई भी वेरिएशन है you can follow this class. Okay, so our complete chapter is finished. Now Hemant is asking, my maths is weak, please tell easy chapters. See, always do not focus on the limited topics. Always focus on where there is a problem. जहां प्रॉब्लम है उसको समझना है. अगर मैथ्स वीक है तो मैथ्स को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट? तो यू हैव टू फोकस ऑन द मैथमेटिक्स. 15 days for February, March, April, May. So 31, 30, 31, and then few days, let's count 15 days for June. So 4 months are available for you, 122 days. And 122 days are more than sufficient to improve any kind of subject. Okay, even you can improve mathematics in simply 60 days. So focus on improvement of mathematics, not on the selected topics, because selection of topics is again a random sampling. And if you rely on sample, you know that there are two types of errors, sampling errors and non-sampling errors. Okay, तो हेमंत ने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है वो इस चैप्टर से कनेक्टेड ही है. तो हेमंत इज आस्किंग लाइक आउट ऑफ 8 चैप्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स कौन से 4-5 चैप्टर्स वो फिनिश कर ले. बट अगर आप रैंडमली सिलेक्शन कर रहे हैं,
हो सकता है कभी जो चैप्टर आपने स्किप कर दिया उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, तो एरर विल बी इन्वॉल्व, और एरर होने से आपके मार्क्स अफेक्ट हो सकते हैं. सो ऑलवेज focus on the complete course, that is the census method, or you can say complete enumeration. Okay, so complete enumeration means more accuracy means more marks. All right. Then Jessica is asking about question number 21. Yes, 21 is saying when there is some problem due to undetected periodicity. जो आपने सिस्टम बना दिया, every 10th unit is selected. तो every 10th unit में जो आपका अरेंजमेंट है, हर बार एक जैसी पॉपुलेशन सेलेक्ट हो रही है, तो इट विल गिव यू मिसलीडिंग रिजल्ट. दिस हैपेंस इन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. ओके, so everything is done now. So let's meet again on the Monday with the next chapters. So till then, bye everyone. Take care and see you on Monday.